we are trying to understand that waqf माने कौन एमते हला कोड आसला इंडिया को केमते आसला. Now waqf term has came from the term wakufa or awaqaf or waqfa. These are Arabic terms. Now these Arabic terms has came into India. What the Muhammad Ghori has to do with it? Let's to know all these things. Then you'll try to understand, then you'll learn, then you'll know what our parliamentarians are saying in the parliament. Because we are here UPSC candidates, you need to understand our things. By saying this, let me tell you, there is a concept of charity. So let's start. So there is a concept of charity in Islam named as zakat. Those non-Muslims viewers over here, zakat in Islam, in short, it is about charity. A portion of Muslims' earning, if you are a Muslim, a small portion of it will be given to the commoners or to the needy people, and that is religiously sanctioned. माने करिया कथा तम केते करूच न करूच that's a different thing. Religion कोची गोटे part एमती दवा कथा, that is called as zakat. Now there is another term, something called as sadaqah-e-zariya. Remember this, sadaqah-e-zariya. Sadaqah-e-zariya means from this sadaqah-e-zariya we'll move towards something called as waqf. Sadaqah-e-zariya means continuous charity. Continuous charity माने if माने मु चाहिबी कि मो पाखे जहाँ प्रॉपर्टी अच्छी मु मरीगला पर भी मोर चलीगला पर भी मरीगला पर भी तार बेनिफिट सोसाइटी नो पुअर नियंतु नीडी नियंतु एंड अदर डेस्टिट्यूट्स should take that benefit of it. That is called as continuous charity. Continuous charity माने मला पर मो गोटे प्रॉपर्टी इन शॉर्ट रे प्रकृत रे पब्लिक को दे गली हेन्स पब्लिक तार किंबा नीडी लोक माने तार फायदा उठेबे किंबा तार सेथुरु से माने बंचिबे किंबा सेथु से माने को हेल्प मिलिबो. दैट इज कॉल्ड एज सदका-ए-जरिया. zakat charity, continuous charity, that is called as sadaqah-e-zariya. A few kichita achi, I hope you are getting. Now this much is enough. To add something, there is something called as Abrahamic thought process. Abraham was the first prophet, right? Abraham kara thought process ru kimba se jo he was the first prophet माने messenger. हिंदू सिस्टम रे गॉड निजे डिसेंड ऑन करती अवतार, किंतु क्रिश्चियनिटी रे इस्लाम रे जुडाइज्म रे गॉड निजे आसंती से मेसेंजर पठाती. दे आर कॉल्ड एज प्रॉफिट्स. द लास्ट प्रॉफिट or the last prophet of Islam is Prophet Muhammad. The last prophet of Christianity is Jesus, Prophet Jesus. Kintu let it be Judaism, Jews, or Christians, or Muslim. तीन जनकर स्रोत, initiator, founder, main prophet, the first prophet is Abraham. Abraham Christianity रे Abraham कहते, Islam रे same prophet will be called as Ibrahim. Hence, let these three religion, Islam, Christianity and Jews are called as Abrahamic thought process. तीन जनकर prophet initially समान, last was change होइचंदी. क्रिश्चियनिटी रे लास्ट को आछंती जीसस, इस्लाम रे लास्ट को आछंती मोहम्मद. ये ताको माननांती से याको माननांती, तेणु करी रिफ्ट अछि. हेंस देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. दे विल फाइट अगेंस्ट ईच अदर. दैट रिलीजियस फाइट इज कॉल्ड एज क्रूसेड. बाय सेइंग दिस, लेट्स कम टू इस्लाम. सदका-ए-जरिया, ज़कात. सदका-ए-जरिया माने कंटीन्यूअस चैरिटी. Now the Prophet Muhammad is saying, when a man dies, gote loko mari sarla pore all his good deeds se jaha bhalo kam kochi will come to an end except three. Gote loko mari sarla pore taro sabu bhalo kam bi tar sange sarjo, kintu tinta jinso rahibo. Gote hochi ongoing charity, that is called as sadaqah-e-zariya. Sadaqah-e-zariya bisare tahale Prophet Muhammad कहचंती. तापरे beneficial knowledge and righteous son, that भलो पुओ थियो जे ता पई प्रे करियो. From this, one thing is clear: sadaqah-e-zariya concept was also been said by that of the Islamic founder, that is the Prophet Muhammad. ठीक अछि. sadaqah-e-zariya माने कोन, मोर जहा प्रॉपर्टी अछि
मु चली गला परे से प्रॉपर्टी को पब्लिक को मु ताको दे गली इस्लाम रे स्टेट कांसेप्ट नहीं आई रिपीट इस्लाम रे स्टेट कांसेप्ट नहीं इस्लाम रे ब्रदरहुड कांसेप्ट अछि इस्लामिक ब्रदरहुड all the Muslims in the world are my brothers and sisters in that sense Islamic brotherhood concept अछि जेतु स्टेट कांसेप्ट नहीं ताहले मु चाली गला परे मोर जहा अछि प्रॉपर्टी मु काहा को देखि जीवी who will manage it हेडा आगु को आसीबो हला मैनेजमेंट सिस्टम इन दैट सेंस ए सेंस रे कुहाला आई एम गिविंग दिस लैंड टू अल्लाह अल्लाह को देखि मु गली किबा खुदा को मु देई गली try to understand Allah has created this cosmos this universe ताका इच्छा मात्र का कोन होची ब्रह्मांड सृष्टि होची he do not need your land here Allah means for the public good as Allah is all righteous all loving all caring all great when Allah koro ette bhalo bhalo qualities अछि he is the greatest rather hence in his name religious or in his name I'm giving this land or my property to the masses in that sense it is being said it has been given to Allah is the creator he does not need anything from he has created cosmos universes he does not need your property right but Allah is so beautifully divine in his name we are giving you so I am giving all my property for the welfare of the public hence it is being said it in the name of Allah or in the name of Khuda whatever getting now let's see let's come to the time of the Prophet Muhammad second caliphate now there is a concept of khalifa caliphate kaku ame kariya modern history class as of now leave it Hazrat Umar he just come to know in the due process of time he will become second khalifa or caliphate ene pai एति तमे मन रखो जेमिति क्रिश्चियन मानकर पोप अछंती सेमिति मुस्लिम मानकर खलीफा थिले एबे आउ ना दैट्स अ डिफरेंट थिंग Hazrat Umar just remember the name Hazrat Umar once will meet around 634 AD okay once will meet Prophet Muhammad and will say sir I have good land माने भलो को अछि जमी जागा अछि fertile land चाष होई परिबो गछ गछ होई परिबो अरबिक वर्ल्ड रे मरुडीटा ता भितरे भलो लैंड गोटे पाया fertile land पाया is a very big thing hence Hazrat Umar in 634 AD I think will go to Prophet Muhammad and will say sir please kindly listen I have this great quality of land in Khyber आ मु चाहूची कि एटा सदा सर्वदा पई कि लोक मानकर भलो पई लागू बुझला so it was his great thought process agreed hence the Prophet Muhammad is saying see Umar then you do one thing you do sadqa zariya to this बुझला you do sadqa zariya to this माने continuous charity माने तमे गला पर भी सोसाइटी यार बेनिफिट उठै पारु थिबो से concept and hence as the Prophet Muhammad was saying to Umar Hazrat Umar those things now tapare gradually Islam spread करची ता भितरे event आइची hence sadqa zariya will become very famous in that of the Arabic land they are Arabic land बुझला तू जतले अल्लाह को नारे थरे प्रॉपर्टी तोर देई देछु सोसाइटी को तणु करी तू आ ताको फेरे कि नबुनी that is normal moral compulsion के फोर्स कोना नमु that is normal गोटे जागा गॉड बनारे तू गोटे काहू देई देछु सोसाइटी भलो पैकी तू ताको फेरे कि नबुनी बुझला hence in the due process of time once a walk always a walk एउठु आसीबो walk शब्दटा कोन will just come to know it now एने पे तम जानो सदका जरिया तापरे अरबिक लैंड रे अरब्स आई होप यू आर गेटिंग ऑन द मैप अरबिक लैंड रे बहुत फेमस हेगला तापरे लोक माने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज गुड डेट्स एंड अदर थिंग्स स्टार्टेड डूइंग सदका जरिया बहुत लैंड देले बहुत प्रॉपर्टी देले ताको जहा चले सेम सब देले ताको देले जतोळे ताको मैनेज करला वाला केही रहिले नहीं
आगु गए मिसमैनेजमेंट हम बुझे थरे तू लैंड दे देलु माने तू ताकू छाड़ी देलु अंडर दिस नाउ देयर इज अ अरबिक टर्म नेम्ड एज वकूफा और अवकफ और वक्फा एउठ हबो वक्फ माने टू होल्ड टू रिस्ट्रेन टू स्टॉप माने तू तो लैंड टा दे देलु तो नाउ यू आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम यूजिंग दैट प्रॉपर्टी you are being hold out from using that property personally और प्राइवेट सेटा नहीं एटा पब्लिक गुड पे लगी होला वकूफा माने होची टू होल्ड टू पुट रिस्ट्रेन getting once you have given the land to or your property not exactly land or your property or anything wealth for sadqa जरिया तो ऊपर गोटे होल्ड लगी होला रेस्ट्रिक्शन लगी होला तू तोर पर्सनल यूज पे कि खर्च ताकू यूज कर परिबुनी सोसाइटी पे लगिवो इन द नेम ऑफ अल्लाह हेंस जो रिस्ट्रेन लगिला हेंस दैट इज कॉल्ड एज वकूफा और वक्फ दैट लैंड विल बिकम एज वक्फ लैंड एउठ आसीबो वक्फ ग्रेजुअली द थिंग्स विल बिकम वेरी फेमस बहुत लोक आसी कोन करिवे ताकर ट्रेजरी एंड अदर थिंग्स दे विल गिफ्ट और विल डोनेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी बहुत टंका आसीबो बहुत प्रॉपर्टी हे जीवो पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली money is a very powerful entity now the prophet Muhammad is no more here he has left this world hence the moral out टंका आगे moral compulsion टिके कमी जाए under these circumstances the mismanagement of this treasury of this wealth will start which is a natural consequence now Islam will spread अरब्स रु बाहर की पर्सिया भीतर पसले पर्सिया माने ईरान सेपरेट नॉर्दर्न अफ्रीका भीतर पसले इजिप्ट एंड ऑल इजिप्ट अप टू मोरक्को आई होप यू नो गेटिंग ऑन द मैप और पॉज द वीडियो सीट ऑन द मैप अरब्स माने जो गो एंड चेक आउट दो जोन ऑफ सऊदी अरेबिया ओमान येमेन दोस पार्ट हां जस्ट पॉज इट इफ यू कैनॉट नो गो टू आवर मैप एंड चेक इट आउट अरब्स रु इस्लाम तापरे स्प्रेड करछि कोठी ना पर्शिया को टुवर्ड्स द राइट ईरान पर्शियंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नॉर्दर्न अफ्रीका up to that of the Morocco, including that of the Egypt. से ता भीतर देखि क्वेश्चन देला इस्लाम तापरे स्प्रेड करछ बुझो नाउ अंडरस्टैंड पर्शियन सिविलाइजेशन गोटे थिला ज्यूज एंशिएंट लोक रोमन्स ले एंड अदर्स एमान को रिलीजन रे भी चैरिटी थिला से माने ताको चैरिटी को ऑर्गेनाइज्ड वे रे करथुले मुस्लिम्स मानकर चैरिटी सदका जरिया ऑर्गेनाइज्ड हे नथला हेंस बहुत मिसमैनेजमेंट होतला भलो थॉट प्रोसेस से आस्ते ही पारे किंतु चोरी हवा सेदरे स्टार्ट हि सालानी 1661 एडी रे अगेन यू डू नॉट नीड दिस उमय्यद डायनेस्टी आसीबो सेथरे नाउ यू नो वांट टू नो दिस नेम खलीफा कैलिफेट मान ताको एमे पई मानि चलो रिलीजियस हेड मानि चलो Abu Sufyan will try to organize this सदका जरिया कॉन्सेप्ट को से ने कोन कोन तक ऑर्गेनाइज करे को चाहउछन और वक्फ तक से ऑर्गेनाइज करे पई चाहउछन से ऑर्गेनाइज करे पई छोटे सिस्टम बनेबे इन ओटा टर्म आसीबो मुत्तावली जोटा कि आज भी इंडिया रे यूज होची हेंस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखा हबो केयर टेकर गोटे लोक रखा हबो ताकू कुआ हबो मुत्तावली इंडिया रे भी आज भी ए टर्म टा यूज होची सो आई एम सेइंग दिस Mutawalis will be kept and other things are there in the name of Allah. Now you are getting what do you mean by in the name of Allah? Allah means here as Allah is all good, similarly the property will be used for all good of the society in that sense. Jala non-Muslim mane bhi now understand this non-Muslim mane bhi waqf को निजरा property दे परिबे किंतु सेटा जहाँ भी प्रॉपर्टी दिया हला सेटा खाली इस्लामिक काम रे ही लागि परिबो तुम सेतरे मंदिर किबा चर्च बनै परिबोनी बुझला आउ तमे तम प्रॉपर्टी सेते बेले देई परिबो वक्फ को जदी सेटा तमरो निजर हेइथिबो तमे निजर तार वैलिड लीगल परिश्रम टंका हेइथिबो चोरी हेइ नथिबो परिश्रम टंका हेइथिबो तमे का को ठकी नथिबो काठू आनी नथिबो एंड व्हाट आउ तमे काठू सेटा धार रे भी नहीं नथिबो इफ यू
qualify all these conditions, then only you can give your treasury or wealth. बुझला? और जी ताकू दबो, the donor will be called as waqif. जे दौची वक्फ को प्रॉपर्टी दौची ताकू कुआब वaqif. प्रॉपर्टी दबु गोटे डीड करा हबो, एग्रीमेंट डीड गोटे साइन करिवु तू कि हां मु ताकू देई देली मो ताकू परे क्लेम करिबिनी. That deed is called as Sak al Waqf. These terms are needed because you'll read this continuously in that of the newspaper. आमे तले ने दो तीन टा टर्म जान ले. प्रथम होची ज़कात, charity. सदका जरिया, continuous charity. Waqf, to hold, to restrain. सदका जरिया property टा waqf property है जो. Now you are getting what does that mean? जिए वाफ को प्रॉपर्टी दब सी हम वाकिफ गोटे सिग्नेचर कर साइन कर डीड रे मान साइन करिवो एग्रीमेंट साइन करिवो कि हां मु एटा को सोसाइटी को दे देली अल्लाह का नाम दे देली. दैट डीड विल बी कॉल्ड एज सक अल वक्फ. बुझला? एते की आ गोटे अछि वक्फ उल औलाद. एटा भी न्यूज रे आछि, खाली सुन दे था. धर मु मोर प्रॉपर्टीज वाफ को दे देली किंतु मु चाहूची सेथरु जहा रेवेन्यू बाहरिवो मु मल्ला परे मो पिला मान को भी किछि पार्ट मिलू तार भी स्कोप अछि. हेंस दैट इज कॉल्ड एज वक्फ उल औलाद. औलाद मान को मिली परिवो किछि पार्ट, इफ नॉट फुली. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस नाउ वक्फ विल बिकम ए ऑर्गेनाइज्ड थिंग. अबू सुफियान जियाकू ऑर्गेनाइज कर देई गले. Now let's come to our history, India history. 1192. I hope you all know this. Prithviraj Chauhan versus Muhammad Ghori. Second battle of Terrain. ता आगुरु मोहम्मद घोरी हारी की माड़ खाई जाइथिला. मार दवार थिला, आमे मारलेनी. धर्म युद्ध करथुला आमे. You should be pragmatic enough to know when to use what. You need to be a Krishna. कारण जो धर्म युद्ध हम सेठी शत्रु भी धर्म रे थिबार अछि. रावण वाज धार्मिक. जोठी the evil thought process will come into picture, you need to act pragmatically. मोहम्मद घोरी को जदि सेतले मार दिया जाय थांदा, then the story would have been different, but unfortunately the history has got some different things to show to us. By saying this, 1192 Muhammad Ghori in the second battle of Terrain will defeat Prithviraj Chauhan. Hence, and will come inside India with the thought process of Ghazi or loot mar karike asla, but well and fine with the thought process of Ghazi. When he will come to India, he'll come and he'll see a very different thing. Now this is a story. How fair is the story we do not know. तले आसुची इंडिया में जैसे देखुची इंडिया रे मठ कांसेप्ट अछि. मठ केमिति इंडिपेंडेंटली चलिबो सेठार किंग माने मठ को लैंड देइचंती. से लैंड रो जो रेवेन्यू बारची सेथरे मठटा पूरा स्मूथली चलछु. Hence Muhammad Ghori will think, wow, this is a very good thing to do. What he will do, all the masjid jete thila masjid ra akha pakha गां गरंकु से सदका जरिया नारे किंबा वक्फ नारे और let it be सदका जरिया नारे, as he was the ruler of the place. तापर से क्लेम कला रूलर होची प्रकृत रे लैंड रो ओनर. किंतु the prophet Muhammad that said you can do sadqa jariya only when it is your own property. Now Muhammad Ghori will say, after winning few parts in India, as मु एठी आसी की लढीची तेणु करी यार प्रकृत ओनर होची मु, तेणु करी मु सदका जरिया करि परिबी. मस्जिद मान को मु लैंड दे परिबी. जेते मस्जिद थिला ता आख पाख जागा को गां घर को बहुत गां को सी दे दो मस्जिद को कहि दबो सदका जरिया और वक्फ लैंड हेगला सेरा. वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ. मोहम्मद घोरी करी जाइछि 1192 रे. Hence those lands can be claimed today provided you need to have some proofs. Now you are getting why there are so many lands been claimed by the Waqf Board. Now 800 years of Islamic rule will come into picture. All the kings will donate the lands to that in the name of the Waqf.
Hence, as Islamic rule was on that of the Indian subcontinent, so most of the lands will come under Waqf. ତମେ କେତେକୁ on କରଛ ନ କରଛ, what the prophet has said or not, that no one knows. This is how the politics moves. Rajaniti emti chale. Whatever might be the case, by this, with this 800 years of rules of Islamic rule, the Waqf land is throughout the nation, including Bangladesh and Pakistan and India. Of course, that of the Afghanistan also. Clear? By saying this, then we know the history. Then Europeans will come into picture. Those long history, 1757 Britishers, but Britishers are now has put their foot very firmly in India. तापर से इनिशियली हिंदू और मुस्लिम्स मानकर रिलीजियस सेंटिमेंट रे छेड़खाल कलेनी. If you want to understand this British, you need to understand the Protestant forms of Christianity. For that, you need to go in a bit detailed way of that of the world history. As of now, we don't have time for that, so leave it. ତେଣୁକରି 1757 ଆସିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଲୋକରା ସେ ଅଯଥା ପାଲାରେ ପଶେନି, କାରଣ 1757 still company was ruling, East India Company was ruling. But because of this massive land and the massive property, massive land अच्छी, massive property अच्छी, का पाखे ना वाफ को पाखे और से जो इतने संपत्ति अच्छी भाई, संपत्ति ऊपर है, धन ऊपर है, ब्रिटिश और नजर तो पड़ी बना से तो आशी चोरी करे को चोर वाला. Now they just cannot let this Waqf property just to move like that. So they need to interfere. कंकड़ा को गोली पानी एठी मिलला 1810 रे बहुत केसेस असला ना कोन ना Waqf मिसमैनेजमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Waqf करथले मिसमैनेजमेंट होची, टंका जाउची, चोरी करछ, तार प्रथम विक्टिम मुस्लिम होची, कारण से टंकार कहार हवार थिला ना मुस्लिम कम्युनिटी हवार थिला. The Prophet Muhammad has said for the good of the society and the people, at least that of the Muslim people, at least. So mismanagement होची, चोरी होची, you are going against your own prophet, you are going against your own God, your own thought process. You should stand against that. ना यही सब केसेस करा आसला ब्रिटिश पाखु. ना ब्रिटिश कहला ओके चोरी फरी होची की, ओके वेल एंड फाइन. 1810 आसला. 1820 रे ये गोटे एक्ट आनले, द लैंड रिजम्पशन एक्ट, I think 1828, the land resumption act 1828 रे आनले हला. से कोन कहले कहला बा तमे कोन चोरी करछ छाड़, जति की लैंड अछि बहुत लैंड देछि मठ को, बहुत लैंड देछि मंक्स को, बहुत लैंड देछि वाफ को भी, बहुत लैंड देछि वाफ. कहला भाई सुनो तमे काहा को देइछ की कहूछ, ब्रिटिश कहूछ, तमे काहा को देइछ न देइछ, वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट. तमु तो भाई लैंड टैक्स दबा को पड़ियो, तमु टंका दबा को पड़िबो. वाफ रा किंतु सेमती सिस्टम नहीं. आई होप यू आर गेटिंग नाउ, राइट? हेंस the British, the powerful British will started extracting money. से देखिले मुस्लिम माने निजे वाक सिस्टम भितर पसिकी मुस्लिम मान को चोरी करी खाउचंती, आमे कहीं न करियो. सी ताकू लीगलाइज चोरी करी खाइले, बुझला. एठी पुनथर करप्शन आसीबो. एइने वाक सिस्टम रे जो माने मुस्लिम माने थिले सी ब्रिटिश संगे मिसिकी समस्त लूटमार करी चोरी करी खाइबो. ब्रिटिश को जेते खुआइबो तार भोक सेते बढ़िबो. से कहला अरे हे भल टंका आसी तो एठू, हेंस से एक्ट पर एक्ट आने की से टंका तो खाई खाई जीवो. अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, बट मुस्लिम कम्युनिटी वाज नॉट हैप्पी विथ इट. अंडर दिस सर्कमस्टांसेस 1857 ने गोटे बड़ जिंस होई जिवो, सिपाही म्यूटिनी हला, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस फाइट ऑफ अस. सिपाही म्यूटिनी होई जिवो. आ सेथरे से मान देखिबे ये हिंदू मुस्लिम गरा से कम मिसी के लड़ देले. ए 1857 रो सिपाही म्यूटिनी पारे से अपीजमेंट मन लगी था. 1857 रु 1857 रु 1893, 1857 रु 1893 जाके ब्रिटिश मुस्लिम मान को मारी छी, कारण सी कहूथबो ए जो सिपाही म्यूटिनी हला से मुस्लिम मानकर भल लीडरशिप रहिला बोली एते बड़ विद्रोह हे गला. सी ताकोठू रिवेंज नउथो अनलेस एंड अंटिल 1885 रे कांग्रेस फॉर्मेशन हे जो गोटे फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशनलाइज नेशनल मूवमेंट गोटे स्टार्ट हे जो इंडिपेंडेंस पाई की.
से तापर तांकर टोन बदल देकी मुस्लिम अपीजमेंट को जिवे से ता आगुर मुस्लिम मान को मारू ही थिले से अपीजमेंट को जिवे से अपीजमेंट को जिवार कारण होची अपीजमेंट करिया पई कि हवा पई कि जोड़े कंडीशन फुलफिल करियार अछि जे बुझी परन मॉडर्न हिस्ट्री क्लास पर तम ताकू बुझी जियो मुस्लिम अपीजमेंट कोन पई गेला 1857 रे मुको चेने रिवोल्ट हे गेला से तापर मुस्लिम मान को मारचंती 1885 रे कांग्रेस फॉर्मेशन हे जिछि गोटे नेशनलिस्ट मूवमेंट पळे आसी नेशनलिस्ट मूवमेंट हैपन टू बी हिंदूज कारण से माने पाठशाटा पढुथिले बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स नाउ दिस मेजॉरिटी हिंदू को आउ गोटे साइजेबल माइनॉरिटी अटके परिबो किबा सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी अटके परिबो दे हैपन टू बी मुस्लिम्स हेंस फ्रॉम मुस्लिम किलिंग्स ब्रिटिश विल गो टू मुस्लिम अपीजमेंट which cost even we are paying today and India will get partition because of this nonsense. Now let's come back to the story. 1857 रे गोटे रिवोल्ट हबो हला एमाने कोन करिवे वाक ब्रिटिश वाक बोर्ड को टैक्स रो एग्जेम्प्ट कर देबे दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट ट्रिप तुम तांको टंका दरकार ना 1864 रे से गोटे काजी एक्ट आनिबे now all these details are not much needed but still गोटे काजी एक्ट आनिबे ना कोन जदी वाक प्रॉपर्टी पर किछि कॉन्फ्लिक्ट हबो ताकू काजी सॉल्व करिवनी ग्राउंड रे काजी सॉल्व करतला ताकू काजी सॉल्व को ताकू ब्रिटिश इंग्लिश जज माने ताकू सॉल्व करिवे 1894 रे लैंड एक्विजिशन एक्ट गोटे आसीबो 1894 84 आई थिंक 94 हाँ जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आसीबो से कहबो कि हमें जो लैंड को एक्वायर करिवु हमें ता विरुद्ध रे कंपेंसेशन दे दो ब्रिटिश को कम दबो किंतु दबो माने तुमको ताकू बिकिया को पड़ियो स्टेट एई बहाना रे से गुडाए लैंड नहीं जीवो कहार ना वाक्फ ब्रिटिश नहीं जीवो आ ता बदल रे कहबो मु तुमको टंका देबी वाक्फ लैंड ता बिक्री हेई परिबोनी एमाने टंका भी नहीं परिबेनी सी ताहले तुमको लैंड भी नहीं गला सी तुमको टंका भी देलानी बुझला आ ब्रिटिश विरुद्ध रे यू कैन नॉट डू एनीथिंग बट वंस ए वर्क ऑलवेज ए वर्क 1911 रे कैपिटल शिफ्ट हला कलकत्ता रु दिल्ली नाउ दिल्ली रे मुगल्स बसची दिल्ली सल्तनत बसची सेठी बहुत भलो मात्रा रे मस्जिद बनी छी आ मस्जिद रा आखा पाखा जगह को वक्फ रे दे दीजी आउ सेटा को इने ब्रिटिश बनौची तार कैपिटल ताकू जागा दरकार है से जागा तक नहीं जाईची से कहूची सी तापरे से भी जानी गलानी वाक लैंड तक नहीं जीवी मु ता टंका देले से मान तो मोटो टंका नेबे नहीं हो तो कहला हो ताल ठीक अछि मु तम जागा तक नेली मु तो 40,000 टंका दउची आ एमाने आ ताटो टंका नहीं पालन से सेही सब जागा जाय कि पार्लियामेंट बनेला हे वाक लैंड ऊपर पार्लियामेंट बनेला नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बनेला से कोर्ट बनेला ये सब तारी पर बनेला आ जानी सुनी की बनेला तापर देखला मुस्लिम्स कैन नॉट डू एनीथिंग ना काहे की बिकॉज मुस्लिम्स नीड द ब्रिटिश टू स्टैंड अगेंस्ट द कांग्रेस एंड दैट कम्युनल सेंटिमेंट कैन ओनली बी फैंड बाय दैट ऑफ द ब्रिटिश सब कथा बुझुची तेणुकर दे कैन डू एनीथिंग नाउ यू आर गेटिंग कौन पाई की क्लेम करुचंती कि 70% ऑफ दिल्ली होची वक्फ बोर्ड रे बोली बुझियो तो की गोटे देकी जाइथिला केबे गोटे आ की गोटे देकी जाय नथला माने से माने एट्रोसिटी करिक नहीं थिल सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस नाउ वी विल सी दोस कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ दोस थिंग्स आर गेटिंग शेप्ड इन इंडिया नाउ 1923 मन पका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड और कोलैप्स्ड किंतु गांधी गोटे तार रूप देखई दीची कि नेशनल मूवमेंट गोटे हेई परिबो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ब्रिटिश पाखरे किछि बाट रहउनी नाउ 1923 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डाउन हे गला परे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म सबडे बम फम फाटुची आ फाटुची माने मुंड खराब होउची कोठी ना बेंगल रे महाराष्ट्र रे एंड अदर प्लेसेस यूपी रे बिहार रे अदर प्लेसेस सबडे बम फाटुची अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ब्रिटिश नीड्स दैट मुस्लिम कार्ड तो से कार्डटा दरकार है ताको अपीजमेंट करया को पड़िबो काकू ना मुस्लिम को
मुस्लिम सेंटिमेंट हूँ कौन ना रिलीजन ताकू रिलीजन ना रे एपट सेपट करी तार फेवर नहीं हम या ब्रिटिश करूला आज डेट रे हम पॉलिटिशियन आज भी कर Britishers were fooling those Muslim masses even those days. Our people are fooling our own people even today. बुझे 1923 रे मुसलमान वक्फ एक्ट गोटे आसला वक्फ में गोटे एक्ट आनला से कहला ब्रिटिश कहूँ हाँ ताको से कार्ड दरकार को कार्ड है ना मुस्लिम कार्ड ना कौन ना गोटे वक्फ बोर्ड बनैबी सबु स्टेट रे सेंटर नुह सबु स्टेट रे गोटे वक्फ बोर्ड बनैबू आउ ताकू से स्टैट्यूटरी पावर देले लीगली लॉ पास करी बनैले ताकू बुझ परछ सो दैट नाउ लेट मी टेल यू 1925 रे आरएसएस फॉर्मेशन हो एते अपीजमेंट हे जिवो आउ एते कम्युनल राइट्स हे जिवो यू नीड टू अपीज द मुस्लिम कम्युनिटी समवेयर वन ऑफ द अपीजमेंट वाज दिस वक्फ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी बनैला किंतु इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड बाय दैट ऑफ द मुस्लिम पीपल and those Muslim people will be close to that of the British. They will ensure that also, so that money can be extracted from that of the waqf. बुझियोची कारण से कलेक्टर टा भी व्हाइट से गवर्नर टा भी व्हाइट गवर्नर जनरल टा भी व्हाइट समस्त को करप्शन टंका दरकार ना आ वaqf पाखे टंका अछि ना बहुत प्रॉपर्टी अछि तेणु कर से निज लोक को नै कि से कोथरे बसेबे ना वaqf बोर्ड रे बसेबे व्हाट अबाउट द कॉमन मुस्लिम masses ना they will suffer. They were suffering and they will continue to suffer unless and until they will open their eyes. गोटे वक्फ बोर्ड प्रेसिडेंट भी कौन कले ना से माने बनैले आ ताकू पावर देले सिविल कोर्ट रो नाउ टेल मी एते प्रॉपर्टी अछि लोक चोरी करी खाइले तुम गोटे प्रेसिडेंट भी बने देलो सी भी चोरी करी खाइला व्हाट अबाउट द कॉमन मुस्लिम पीपल नथिंग किंतु ग्राउंड रे मासेस खुशी हे जीवो because the Muslim community is highly religiously biased एक कथा ब्रिटिश भी बुझला एक कथा आज का डेट रो पॉलिटिकल क्लास बुझुची hence they are doing the same drama getting गोटे वक्फ बोर्ड रो प्रेसिडेंट बनेला ताकू सिविल कोर्ट रो पावर देला गोटे वक्फ बोर्ड बनौची एक्ट बनेगी ना काहे की ना that was the time British needs a Muslim card because Gandhi had shown the national movement is a possibility in India by that of the non-cooperation movement and the revolutionary nationalists are bombing and killing these whites throughout the nation then and they happen to be Hindu hence we need that Muslim card for that an appeasement is needed hence in 1923 Mussalman Waqf Act 1923 will come Waqf Board will come into picture Waqf Board president will come into picture every district there will be a Waqf commissioner every district there will be a waqf commissioner to handle waqf property taapor the waqf fund banala and also been made and we all know when British is on the hand and the corrupt officials to manage this fund all the funds will be taken out and hence the British will continue to exploit and will take all the resources from that of the waqf and the waqf along with those corrupt officials will always serve that of the British एतो सब हो गला पर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री यू नो 1947 unfortunately will get divided the partition of our motherland will happen इंडिया रू बहुत मुस्लिम छाड़ी के जिवे पाकिस्तान सेपुटू हिंदू एंड सिख आसीबे इंडिया मु तुम कोन कहथली मन पक मुत्तावली से लोक जे कि इन शॉर्ट ग्राउंड रे इन शॉर्ट आउ भी अछि ग्राउंड रे से माने केयर टेकर थिले वaqf रो प्रॉपर्टी मान को केयर टेकर करथिले जतले पार्टीशन हला बहुत मुत्तावली इंडिया रू छाड़ी की पळिले कोठी ना पाकिस्तान को बुझेला नाउ राइट्स एवरीवेयर एवरीवन किलिंग ईच अदर कोटा वaqf प्रॉपर्टी कोटा लोकल लोकर प्रॉपर्टी किछि जणा पड़लानी जदि इंडिया निजकू सेक्युलर बोली डिक्लेयर करथिला 1947 ने ताले प्रकृत रे सेक्युलर हे जिवार थिला अपीजमेंट करर किछि कारण नथिला दिस थिंग्स आर बीइंग सेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस डेज तेणुक नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सेपटू जो हिंदू और सिख मैंने आसिले एपटू जो मुस्लिम मैंने छाड़ी की गले पाकिस्तान को एठी जो लैंड टा बढ़ला सेठी हिंदू और सिख मान को एस्टाब्लिश करावा कथा नाउ दैट मेक सेंस आल्सो ओके वेल एंड फाइन किंतु ताको जमंदे आसिले ताको लैंड दे दर थिला पटा दे दर थिला ताको बाबा तुम एठी सेटल्ड हो लेट्स सॉल्व द मैटर as soon as possible से जो प्रॉपर्टी वाला को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहला इवैक्यूई प्रॉपर्टी
तापर गोटे एक्ट आनला इवाक्यू प्रॉपर्टी 1950 हेन्स इवाक्यू प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट तार निजर प्रॉपर्टी बना देला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बुझला तापर वाफ कहला जते जिंस सेटल डाउन हो गला राइट्स कमी गला वाफ कहला आमर जो एठू मुस्लिम माने छाड़ी की जाइचंती पाकिस्तान को जहा प्रॉपर्टी सबुतक वाफ प्रॉपर्टी ना काई गो सेमती हो सबुतक वाफ प्रॉपर्टी से सेथरे कोर्ट पड़ेला कोर्ट कहला प्रूफ दियो बिकॉज कोर्ट वांट सम पेपर टू शो समथिंग से कोर्ट किसी प्रूफ दे पारलेनी द प्रेजेंट गवर्नमेंट बिकम लिबरल तापर कहि दबो कि हां से प्रॉपर्टी तक तमर कहा रे गला मुस्लिम कॉमन मासेस नो आज ए होल वाफ करो हेन्स सेथरे चोरी करी खाइ जो दैट्स अ डिफरेंट थिंग गवर्नमेंट तार सॉफ्ट कॉर्नर देखैला कोन में देखैला गॉड माइट बी नोइंग किंतु से कोन कोन सेतको जो जगह छाड़ी होतला इवाक्यू प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रे थिला सेटा कह दिला कि से वाफ रे बोली द प्रॉपर्टी गिवन टू द वाफ द अपीजमेंट हैज गॉट हाईली स्टार्टेड which was not needed in a secular country बहुत भूल काम हे साथला से तोड़को but at least in an independent country once we have declared to be secular or decided to be secular we should remain secular then 1952 a Congress MP SM Ahmad Kazmi you can go and google it out SM Ahmad Kazmi was asked to identify the waqf property से गले आइडेंटिफाई करले 2 वर्ष पर waqf act 1950 एगरा तमे सब पेपर रे पढुछ Waqf Act 1954 will come into picture. सेठी कोन ना सबु स्टेट रो भारत रे जते स्टेट अछि सबु स्टेट रो गोटे गोटे निजर वाक्फ बोर्ड हबो जेमते ब्रिटिश करथला मन पड़छि गोटे गोटे वाक्फ बोर्ड हबो बुझला टेंपल मंदिर गरा मेजर मंदिर बड़ बड़ मंदिर जोठू रेवेन्यू अछि सेटा गवर्नमेंट अंडर को पळेला सेठू से रेवेन्यू नौची गवर्नमेंट एबे भी निजर खर्च बार्च चलाउछ सोशल फंडिंग सब व्हाटएवर निजर खर्च बार्च चलाउछ गवर्नमेंट वाफ को निज गोटे इंडिपेंडेंट बने की ताको टंका ताकर पाखे रहिला सेमान सब गले हेन्स देयर इज अ सिस्टम ऑफ माने कोन डिसअपॉइंटमेंट विद इन द अवेयर हिंदू कम्युनिटी this will lead to the rise of communalism in India in the sake of appeasement केरा करियर किछि दरकार नथिला वाफ आर्ट गोटे आसला you should be thinking about the common muslim masses you should not think about those those bigger bodies टंका आसी कोड जाउची ना समस्त चोरी करी खाइ गले बुझौची with all due respect to our forefathers गोटे वाफ आर्ट आसला वाफ आर्ट 1954 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबु स्टेट रे से माने गोटे गोटे वाफ बोर्ड बनै देले हेन्स तापर कोन तापर गोटे ना सुनथबो वाफ बाय यूजर आगुरु प्री इंडिपेंडेंस भी हो कि आगुरु भी हो किंबा पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हो कागज पत्र इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग पेपर्स धर गोटे जागा धर गोटे मस्जिद रे अछि ता पाखे गोटे जागा अछि हला से जागा रे मस्जिद फुल हेला पर किछि लोक जाय कि नमाज पढुचंती जदि ओनर कहिबो कि हो ताले ठीक अछि ए जागाटा को मु वाफ को दे देली आ ता पाखे तार लैंड नाही सॉरी तार पेपर नाही किन तार कब्जा रे थिला जदि से देई देला ताले सेटा भी वाफ प्रॉपर्टी गेला ताको कोनती वाफ बाय यूजर से ताको यूज करछ हला ये ताको देई दोछ ओनर ऊपर किंतु फोर्स है बिना प्रॉपर्टी रे से ताको देई देछ इन शॉर्ट इन जनरल दिस इज कॉल्ड एज वाफ बाय यूजर सिंस लॉन्ग टाइम ओनर माने सही जगहटा इस्लामिक पर्पस में यूज होची since do not have owner does not have any problem then it can be waqf property तमे एटा सुनथुव ना कोन 1954 एक्ट waqf by user एठी कोन कला गवर्नमेंट गोटे नाउ अंडरस्टैंड ना तमे एटा सुनथुव सर्वे कमिश्नर गोटे सर्वे कमिश्नर पोस्ट क्रिएट कला सर्वे कमिश्नर सर्वे करिवो waqf प्रॉपर्टी मानकू स्टेप बरा मन था सर्वे कमिश्नर बनेला से प्रॉपर्टी मानकू सर्वे कला सर्वे बने की गोटे रिपोर्ट देला गवर्नमेंट को क्रॉस चेक करियार थिला कि से सर्वेटा ठीक अछि ना नहीं गवर्नमेंट अपीजमेंट पॉलिसी नहीं की
कारण से राइट्स हेतिला ना अपीजमेंट पॉलिसी नहीं की सी ताकू वाफ बोर्ड को दे देबो एटा बुझलो वाफ बोर्ड को दे देबो वाफ बोर्ड ताकू सर्वे न करिगी जेतु ता फेवर रे अछि सी ताकू ऑफिशियल गैजेट रे प्रिंट कर देबो और जदि ऑफिशियल गैजेट रे प्रिंट कर देबो ताहले से प्रॉपर्टीटा वाफ रह गला तो माने माने होची सेया गवर्नमेंट गोटे बॉडी बनेला सर्वे कमिश्नर जहाँ सर्वे करिवो ता सर्वे रो वैलिडिटी को केही क्वेश्चन कला ना से जहाँ सर्वे कला ताकू टंका दियो ब्राइब करो जहाँ करो डू एनीथिंग सेटल टाइम थिंक ऑफ 1950s and 60s those days absolutely no transparency no social media nothing टंका पद दियो तुम जहाँ करो सर्वे कमिश्नर जहाँ थरे कह दो ता माने हेगला सर्वे कमिश्नर सर्वे करिकी गवर्नमेंट को दबो गवर्नमेंट भी क्रॉस चेक करबनी से ताकू दे दबो वाक बोर्ड ताकू ऑफिशियल गैजेट रे प्रिंट कर दबो ताले से वाक प्रॉपर्टी हेगला सेटा तो घर हेतिले बी सर्वे कमिश्नर केमती सर्वे करे ना विथ द थॉट प्रोसेस कि वंस ए वाक ऑलवेज ए वाक सी जे वाक बोर्ड ताकू कोन देखैबो ना 2000 वर्ष तले द स्पेसिफिक किंग ए लैंड टाकू दान रे देथिला 1000 वर्ष तले दान रे देथिला से किंग ता आसला कोडू ना बाहर आसला आक्रांत करी आसला ना ता आगुरु करथिला ना ता आगुरु या करथिला ना 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 ताल हबन से थरे दान दे देछि थरे वाफ हे जेछि तनु से वाफ हे गला से आगुरु आउ गोटे लोकर थिला सेटा कंसीडरेशन को निया हलानी एमिति है कि बहुत प्रॉपर्टी बढ़ी गला ताहले आम आदमी ताहले क्वाड जीवो इवन टुडे यू कैन नॉट गो टू कोर्ट और सेटल टाइम रे कोर्ट जीवा वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी स्टिल देन बहुत लोक किछि लोक गले कोर्ट सिविल कोर्ट को मु ट्राइब्यूनल कोनी मु कोजी सिविल कोर्ट को यू माइट आस्क अबाउट द ट्राइब्यूनल विल कम टू दैट आई एम सेइंग अबाउट द सिविल कोर्ट्स सिविल कोर्ट गले सिविल कोर्ट रे केसेस बहुत बढ़ी गला तर आउ गोटे ये थिला लॉ थिला ऑफिशियल गैजेट रे थरे पब्लिश हे जीवो आउ तू वर्ष भीतर जदी क्लेम न करिवु ताहले प्रॉपर्टीटा तोर वाक रह गला ना माने तो से आउ माने मो प्रॉपर्टी तार कागज पत्र मो पाखरे अछि ऑफिशियल गैजेट कोन आई स्ट्रांगली नो दैट यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ मूवी देखिनी माने जदी भी देखछि बहुत कम से देखछि आ ताको के पढुछि गोटे आम आदमी गाँव सी जाकि पढ़िबो ऑफिशियल गैजेट ए मैन फ्रॉम दैट ऑफ द तमिलनाडु विलेज ऑफिशियल गैजेट बीन written mostly in English or Hindi those days will go and will read your official gazette that won't make any sense वर्षे भितर तू जदि क्लेम न कलु कोर्ट को जदि न गलु कोर्ट को जीवा इज अ वेरी टफ थिंग ताहले से प्रॉपर्टी वाक रे जो वंस ए वाक ऑलवेज वाक तो हाथ गला सदा सर्वदा पे तू कहबो जनरेशंस आफ्टर जनरेशन हम से थिलु हम जगह ना हो हे परिबनी किछि दिस इज कॉल्ड एज एट्रोसिटी this will create a rift between Muslims and non-Muslims. Now these things are getting amended in the amendment bill. Everyone should support it. A wakru konosi common normal Muslim middle class normal Muslim class kebe कार फायदा है more or less है नहीं getting थरे सर्वे सला परे 20 वर्ष पर जे सर्वे होबो बुझला लेट्स रिपीट सर्वे कमिश्नर सर्वे करिवो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दबो गवर्नमेंट वाक बोर्ड को दबो वाक बोर्ड ऑफिशियल गैजेट प्रिंट कर दबो वाक रो हे गला प्रॉपर्टी तू वर्ष भीतर कोर्ट को जीवु न गले तू गलु प्रॉपर्टी तार बुझला एथरा बहुत केस बढ़ला अपीजमेंट पुणी केम थिला नाउ अंडरस्टैंड दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिमिटेशन एक्ट 1908 लिमिटेशन एक्ट रे गोटे लॉ थिला गोटे जगह जदि किए 12 वर्ष रही जाइछि ताहले जदि किए रही जाइछि 12 वर्ष ताहले सी से जगह ओनरशिप को क्लेम करि परियो गोटे जगह जदि किए 12 लिमिटेशन एक्ट 1908 ब्रिटिश जदि किए गोटे 12 वर्ष रही जाइछि सी से जगह को क्लेम करि परिबो वाक वाला कहउचंती वाक जो प्रॉपर्टी को मोर बोली कहउछि धर मो लैंड टाकू वाक कहउछि तार बोली मु जाई कहबी कोर्ट रे साहब देखंतु मो वकील कहबो लिमिटेशन एक्ट 1908 अनुसार 12 वर्ष रु अधिका रहिचंती माने मु रहिछि तणु करी वाक ताकू नै परिबोनी
गवर्नमेंट कौन कला 12 वर्ष को बढ़े 30 वर्ष करदेला कहीं कलु ना करदेला अपीजमेंट तापर एमती बहुत लैंड थिला जोठी की माने बहुत लैंड थिला जेमती मोर बापंकर बाप 30 वर्ष हेलानी आगुरु से माने सेठी रही आछंती तापरे गवर्नमेंट ताऊ चेंज करके इनडेफिनाइट टाइम पीरियड करदेला माने ता माने थरे वाक जदी क्लेम करिवो ताले सेटा वाक रही गला लिमिटेशन एक्ट अनुसार मु जदी गोटे लैंड रे 12 वर्ष रही ओनर मु वाक मोर किसी कर परिबो गवर्नमेंट ताकू बदले की 30 वर्ष करदेला मु कहले अरे 30 वर्ष रु बेसी मु रही गवर्नमेंट कहला अच्छा गवर्नमेंट कहला इनडेफिनाइट तू जते रहउछ र वाक माने सेटा वाक ताकू दे दे तू मो पाखर पेपर अच्छी कागज अच्छी सबू मोर लीगली मु ना हबनी दिस इज द ड्रैकोनियन पॉलिसी दिस विल क्रिएट ए रिफ्ट विद इन द सोसाइटी ए रिफ्ट जोगु 1947 हेइतिला why are we creating the rift once again because of this acts एथर कौन हला ना वक्फ बोर्ड वाला बहुत जगह क्लेम कले से काई क्लेम कले ना से थ्रू टंका बाहर करप्शन बहुत हुए आउ इलेक्शन लड़ाई पे टंका दरकार इंडिया रे मुस्लिम्स इस्लाम इज ए कास्ट इज नॉट ए रिलीजन पॉलिटिकली जदी माने वोट बैंक पॉलिटिक्स अनुसार कैलकुलेशन अनुसार मुस्लिम गोटे कास्ट जेमती यादव गोटे कास्ट सेमती गोटे बड़ कास्ट से माने माइनॉरिटी नुह एई टाइप रो राजनीति चले आ राजनीति करिया पई कि यू नो यू नीड हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी जे टंका दे पारियो पॉलिटिकल क्लास ता पाखरे ठिया हबो वक्फ बोर्ड हेले क्लेम कला सब याडू साडू जगह जले मासे सफरिंग हेला पॉलिटिकल क्लास चुप रहिले कारण पॉलिटिकल क्लास जानी ची या ये पछे मते वोट न दउ मु आ गोटे का मद मांस दे देले से मते वोट देई दबो hence because of this enormous property will come to work enormous corruption will come into picture mismanagement will come into picture government in trouble एने से बनेवा CWC सेंट्रल वक्फ काउंसिल बुझला एतो जे नथिला आउ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी बनेवो जे सो स्टेट बोर्ड मानकू कंट्रोल करबा पई कि CWC बनेवो सेंट्रल वक्फ काउंसिल आउ ताकू किन से माने इंडिपेंडेंटली काम करबो स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट बनी इंडिपेंडेंटली काम करियो आ ताकू डायरेक्टली रखिला मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर रे माने से सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी बसला बुझ पारथवा हाउ पावरफुल दे वुड बी द प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली देन केम इंदिरा गांधी तापर सी ओटे लेटर लिखियो टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ ना काहे कि ना जस्ट सेफगार्ड द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ एंड द थिंग्स व्हेन नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट Yogi is saying or CM of UP what Yogi Ji Maharaj is saying 1989 ro Chief Minister Narayan Dutt Tiwari I think Narayan Dutt Tiwari was the Chief Minister she kon karibo what Tiwari ji will do he will she kabe jettak unregistered uncultivated land achi sabu tak पूरा स्टेट रे अनरजिस्टर्ड अनकल्टिवेटेड लैंड अच्छी सबू तक दे दे का ना वापू ना काहे कि ना अपीजमेंट कैन यू बिलीव व्हाट डज दैट मीन अनरजिस्टर्ड एमती बहुत लैंड अनरजिस्टर्ड अच्छी सेते बेल तो सबू तक काम होथला कोथरे कागज रे पेपर चिट दियो अनरजिस्टर्ड हे गला अनरजिस्टर्ड अनकल्टिवेटेड लैंड लेट मी टेल यू अनरजिस्टर्ड द टाउनशिप्स द टाउन लैंड्स आर आल्सो अनकल्टिवेटेड लैंड now you are getting what amount of corruption the scam those days it was going on uncultivated unregistered land को वक्फ को दे दिया ना एक लैंड ऊपर एने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्लेम करछ बुझेला now you are reading this things एते लक्ष्य ये हेगला सेते लक्ष्य से हेगला एई लैंड को क्लेम करछ ने के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्लेम करछ once this amendment bill will become an act UP government will take it back then came PV Narasimha Rao 1995 सी आ गोटे एक्ट आनले हला एक्ट वक्फ एक्ट 1995 से आनले आगुरु जो तमे सिविल कोर्ट पढौथलो पीवी नरसिम्हा राव कहते सिविल कोर्ट गले कोर्ट रे बहुत केसेस बढ़ी जाउची ताला मोटे फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल बनेबू ट्राइब्यूनल बने डू नॉट थिंक कि ट्राइब्यूनल ले खाली मुस्लिम मान थिबो सेमति
तीन टा मेंबर थे स्टेट सिविल सर्विस वाला गोटे थी यू नो हाउ करप्ट दे आर जुडिशियल मेंबर गोटे थी यू ऑल्सो नो दैट आ गोटे लॉ मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट मान गोटे थी माने ट्राइब्यूनल बट these three members and we very well know how these people can be brought up and other things no appeal से जहाँ डिसीजन देवे सेटा फाइनल तमे आउ कोर्ट क्वाड जाई परिबनी अरे एंड धर मोर जागाटाकू वाफ तार क्लेम कर देछि मु कोर्ट जीवी मु कोर्ट जे कि प्रूफ करी कि जागाटा मोर टिल दैट टाइम जागाटा होची वाफ कर बर्डन टू प्रूव होची एग्रीव्ड ओनर माने मो जगह तू नेलु मो पारे खाए को नहीं मु कोडे कोर्ट जीवी दैट टू तमरी ट्राइब्यूनल को आई विल गो टू योर ट्राइब्यूनल टू स्टैंड अगेंस्ट यू सेइंग आई एम द ओनर आई विल गिव द प्रूफ तापर तू कहबो कि मु ठीक ना नहीं एटा को काटिची अमेंडमेंट बिल एंड व्हाट्स रॉन्ग इन इट माने कोर्ट जाई परबे एबे तमे बुझिउची Now Sacher committee, I hope you know this. She कहिछि that to 2005 रे कहिछि. Now we are in 2025. लक्षे 20,000 कोटी टकार प्रॉपर्टी अछि वाफ पर. What about the common Muslim masses? They are staying in slums. 12,000 कोटी मिनिमम आसिया कथा रेवेन्यू सेमान देखुछन 163 कोटी. बाकी टका पड़े वाला आइदर मिसमैनेज होइछि नाले तमे चोरी करछ किबा जोड़ा करछ व्हाट अबाउट दैट पॉवर्टी रिडन फॉरगेट अबाउट एनीवन लेट्स टॉक ओनली अबाउट द मुस्लिम्स दे आर आवर ओन पीपल इंडियंस राइट तो स्पेसिफिकली जदि गोटे भलो हेल्थ सिस्टम नाम पे थांदा एटलीस्ट अदर हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऊपर प्रेशर तो कम थांदा एति तो ही थांदा आमरी लोक कि किछि भलो हेल्थ फैसिलिटी तो मिल थांदा एजुकेशन मिल था किसी तो है था वेयर द हेल द मनी हैज गॉन ना ये एमती नहीं गला सी सेंदी माडी बसला जे नहीं गला माडी बसला तमे ताकू देलो बोली हेला ना गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ना ऑल दिस थिंग्स विल गेट टेम्ड आउट इफ नॉट फुल्ली टू मच ऑफ इट्स एक्सटेंट ट्रिपल तलाक बैन हला इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हला ता माने कोन बंद हे गला कमिला तो few of our sisters or many of our sisters are not getting victimized तांको लाइफ किसी बदल जाउनी किंतु से लेवल रो विक्टिमाइजेशन तो होउनी ना has it stopped ना no similarly with this things will change immediately ना no but the change will get started at least the Muslim community should come out and ask भाई एते टका जो तमर आछि जाउ छु गुआडे मो पई हेल्थ काई नहीं मो पई खा काई नहीं मो पई चाकरी काई नहीं मो पे एते जिनस कहीं नहीं कारण मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रो बजट होची 3183 कोटी बाय द सचर कमिटी रिपोर्ट दैट टू ऑफ 2005 it should be earning around 12,000 crores but it is earning 168 crores or 163 crores what the hell the rest of the money has gone I need to ask you need to say माडी बसियो जबरदस्तिया व्यापार करियो पॉलिटिकल फंडिंग करियो ब्यूरोक्रेसी को टका दो एंड विजय माल्या रो लिकर शॉप को एमान तक जगह दी alcohol is haram in Islam no one to ask no one to see money is a very powerful concept was is and will always remain it will supersede God it will supersede morality it will supersede ethics it will supersede everything it's an absolutely powerful concept when money comes religion dies and all the forces will get clubbed up. See, the bureaucracy, the politicians, the lawyers, the media, everyone get clubbed up. Then we'll see the amendment bill next video.